Good evening, students.
So today we'll learn so many popular input devices, okay, which is comes in your every exam, competitive exams. So today you must learn your stylus. Good. Sachidanand asking ALU. ALU is a arithmetic logic unit. उसको आलू तो नहीं पढ़ रहे हो ना? So if any mathematical calculation you are doing in the computer system, that is performed by arithmetic logic unit, that is a device, okay, like a memory device. One of the device is to be there within your CPU. The device is called ALU, that is arithmetic logic unit. Okay. Okay, so let's start. Okay. So I disable your group chat. Once I cover the input devices, then I again enable your group chat and you can ask the question. Okay, students? So this is already learned in the previous class also. Electronic pen. This is also called as light pen. Okay, how it will be look like? Just like a pen. That's why it is called as light pen. Okay, so first of all, you must have to find out this is an input or an output device. Yes, this is an input device because this is operated by the user. Okay, it never give any result. If you want to store anything in the computer, you must have to use the what? Input device. So one of the input device we have discussed now, that is electronic pen. Okay, it is also called as point and draw device. Why it is called point and draw device? Because these devices are always used to move the cursor. Movement of the cursor is depends upon the point and draw device. We are popularly use the mouse as a point and draw device. Okay, and most of point and draw devices are there. So one of them is electronic pen. Okay, so if you want to point and to select any icon, also we can use the point and draw device. But what is the use of light pen? Light pen is always used for making drawing. Okay, so generally light pen is helpful for making drawing. And it is rapidly moves on the screen just like a ordinary pen. जैसे हम पेन को यूज करते हैं वैसे ही हम लाइट पेन को जैसे चाहेंगे वैसे मूव कर पाएंगे. Okay, so but it works with electricity. So how it will be work? It provides a electric supply. Okay, without electricity the light pen is never works. Light pen does not need any alphabetical keys. उसे कोई alphabetical keys की जरूरत नहीं है. Fine. So here also some of the point will be written, that is how it will be work as a mouse. Okay, in the tip of the pen, if you click it or press it, it just act as a click, that is left click of a mouse. Okay, पेन के ऊपर एक टिप जैसा रहता है उसे
प्रेस करने से वो क्लिक करने की जैसे काम करता है, जैसे माउस में हम क्लिक कर पाते हैं। ओके, प्रेशर ऑन टिप ऑफ ए साइड बटन। ओके, साइड बटन में अगर हम प्रेशर देके क्लिक करेंगे, सो इज यूज टू कॉज सेम एक्शन एज right button. As we know that we are in the mouse there are two clicks we are using, that is left and right click, and in the light pen also you can use for what, left and right click when you use the tip of the pen. Okay, so pen के ऊपर एक टिप रहता है जिससे हम साइड में अगर प्रेशर देके क्लिक करेंगे तो वो राइट बटन की तरह काम करेगा। फाइन। टच स्क्रीन, it enables the user to touch the data directly by using fingers within display area. Again, without using any mouse, if you place the finger over the icon or the picture, it automatically open. Okay, it is very simple and easy to use currently. As we know that we are using fingers, it is very simple and easy to use. And mostly we are using touch screen in the what, in the mobile phones. Okay, so one of the best example of the touch screen is your mobile phone. Data scanning devices. What is the use of this scanning device? One of the scanning device is used as flatbed scanner and handheld scanner. So first we have to understand what is scanning device. What is the use of this device? Okay, it is also called as a image scanner. इसे क्या बोला जाता है? Image scanner भी बोला जाता है. Okay, why it is called? Because it translated the printed document into an electronic format. Whatever is to print on the documents, पेपर में जो भी प्रिंट रहता है, अगर उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अगर स्टोर करना चाहेंगे, if you want to store printed document into an electronic format and stores them into the computer. Okay, so we are using scanner devices for this purpose. Okay, important document can be preserved, है कि नहीं? हम जो भी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं वो कितने दिनों तक रहता है पेपर फॉर्मेट में? वेरी फ्यू ईयर्स, है कि नहीं? उसमें अगर पानी गिर जाए या फिर कीड़े लग जाए तो क्या हो जाएगा? वो डैमेज हो जाएगा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. सो इफ यू स्टोर द डॉक्यूमेंट थ्रू द स्कैनर, okay, whatever the document is to be there in a paper format, if you store it in an electronic format, okay, in the computer, then we need a what? Scanning devices, so that we can save our important document for a long time. Okay, so important documents can be preserved in an electronic form by using image scanner for later use. These are further classified into how many types? Two types. One is flatbed scanner, another is handheld scanner. Okay, तो देखेंगे flatbed scanner क्या है? It is like a photocopier machine with a glass sheet. I think all of you see the scanner device. Okay, how it will look like? देखो flatbed scanner कैसे दिखता है? When you open that, the upper part, the cover, okay, you see that is the layer, that is a glass surface is to be there. Glass sheet की तरह रहता है वहां पर. Okay, and you place your paper over that glass and it automatically scans the document through the light. Fine. So it is like a photocopier machine with a glass sheet. It is also called desktop scanner. In a flatbed scanner, the paper is placed on a glass sheet
कहाँ पर पेपर को रखा जाता है? ग्लास शीट में रखा जाता है। ग्लास शीट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पर एक कवर हुआ है, उस कवर को ऊपर उठाएंगे तो उसके नीचे ग्लास सरफेस रहेगा। उस ग्लास सरफेस के ऊपर आप क्या रखोगे? आपका जो भी डॉक्यूमेंट स्टोर करना है कंप्यूटर में, सो दैट प्रिंटेड डॉक्यूमेंट यू हैव टू प्लेस over the what? Glass sheet and a light source. When you cover that one, okay, जो आपका ऊपर का जो है लेयर है उसको अगर हम कवर कर देंगे, फिर क्या होगा? A light source is moved horizontally. वहां पर क्या चलेगा? लाइट सरफेस रहेगा जो हमारे पेपर के ऊपर मूव करेगा horizontally from line to other line. This process is repeated until all the lines are completed. So light beam is to be applied or moved over the surface of the paper horizontally. कैसे move करेगा? Horizontally move होगा, line by line. Okay, so when it's scanned line by line, the document is automatically stored in electronic format. When it complete all the lines of the paper, then it creates an electronic document and store automatically in the computer. ओके, कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली स्कैन होने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक जो सारा डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगा. सो दैट इज ऑटोमेटिकली स्टोर इन द कंप्यूटर सिस्टम. ओके, इन दिस वे वी कैन यूज द व्हाट? फ्लैट बेड स्कैनर. फाइन. व्हाट इज अ हैंड हेल्ड स्कैनर? देखो, हैंड हेल्ड स्कैनर क्यों बोला गया? बिकॉज हम उसको हाथ में पकड़े हुए हैं. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हैंड हेल्ड स्कैनर. इट वर्क मच लाइक ए फ्लैट बेड स्कैनर, but it works manually by the user itself for scanning the document or products. देखो वहां पर क्या होता है फ्लैट बेड स्कैनर में? ग्लास के सरफेस के ऊपर हम सिर्फ पेपर को रख देंगे और the other things will be automatically done by the flat bed scanner. The light beam is automatically moved horizontally, line by line, and when it completes or the light beam is reached to the end of the page, automatically it convert into electronic format and saved in the computer. But in case of handheld scanner, what we do? We move that handheld device line by line over the, हमें खुद को move करना पड़ेगा उसे पकड़ के. Okay, over the page we have placed that handheld scanner and move line by line. Okay, so that is done by the user, manually by the user itself for scanning the documents or products. The scanner is dragged slowly with its light on. ओके, कैसे हमें मूव करना पड़ेगा? धीरे धीरे करके उसके ऊपर ड्रैग करना पड़ेगा. ओके, वो लाइट उसके ऊपर डाल के. ओके, इट इज मोस्टली यूज्ड इन शॉप्स और स्कैन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. सो वेयर वी यूज दिस डिवाइस, इट इज मोस्टली यूज्ड इन शॉप्स और शॉप फॉर द व्हाट? स्कैन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. आप देखे होगे शॉपकीपर के पास इस तरह का एक स्कैनर रहता है कि नहीं? whenever you purchase anything, it the handheld scanner will be placed over the product and automatically detect what is the price of that product and loaded in the computer system. Okay, so that's why within a few time we can calculate, the shopkeeper is calculate the total price of all the items and give it to you. Okay, so that is the benefit of handheld scanner. I think all of you understand what is the difference between flatbed scanner and a handheld scanner. Handheld scanner is manually done by the user. Okay, हमें खुद करना पड़ता है स्कैन करने के लिए. But in case of flatbed scanner, you only place the paper properly over the glass sheet, and the other thing is automatically done by the what? Flatbed scanner. Okay. Just like a handheld scanner, we are using another recognition device that is called OCR. What is the full form of OCR? This is mostly comes in your exam, okay, in your competitive exam. That is, what is the full form of OCR and what is the requirement of this device? Fine. So what is the full form? Optical
character recognition. What is the full form of OCR? Optical character recognition. It is also just like a what? Handheld scanner. ओके वैसे ही इसमें भी क्या करना पड़ता है हमें, वो एक सॉफ्टवेयर लोड किया जाता है दैट इज कॉल्ड OCR सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स योर टेक्स्ट और इमेजेस इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, बट दैट इज आल्सो डन बाय मैनुअली बाय द यूजर. फाइन. So two standards of OCR fonts are used. That is OCR-A, that is the American standard. Another is European standard, that is OCR-B. So according to the requirement, you have purchased the device. Either you are purchasing OCR-A or B. Okay. Another very important, that is optical mark reader. You are attend, I think in the entrance exam, that is any school entrance exam, you also appear, I think. Here also you get some optical OMR sheets for objective type of questions. See in this figure. Okay, this type of question you have to get, and the OMR sheet will be given. That is act as your answer sheet. जैसे 1 का आंसर क्या है? B है. So you use the what? Pencil or a pen to round that, choose that option. Okay, सर्कल में जो है सर्कल को हम फिल करते हैं. So that is called your OMR sheet, which is detected by the computer. Fine. So it has the capability to recognize the pre-mentioned marks either of a pen or a pencil. कैसे उसे मार्क करना है? We can use either pen or a pencil. It is specifically helpful for making objective type of question. कहाँ पर हम इसे use कर पाएंगे? For objective type of questions में ही ये हमें helpful होगा. The students mark the answer sheet by filling or darkening a circle, ओवल शेप्ड और स्क्वायर शेप्ड. आपको जो OMR शीट दिया गया होगा उसमें जो सिंबल्स होंगे वो सर्कल, ओवल और स्क्वायर शेप में होंगे. उसे हमें फिल करना है. हाउ टू फिल? बाय यूजिंग पेंसिल और पेन. ओके, दिस प्रिंटेड आंसर इज fed into the computer and the grading is done by using optical mark reader. कैसे ग्रेड ऑटोमेटिकली आ जाता है? By using OMR डिवाइस से. ओके, OMR डिवाइस में उस OMR शीट को अगर हम उसमें रखेंगे तब ऑटोमेटिकली कितने आंसर्स आपके सही रहे वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट दिखा देता है. ओके, सो दैट विदिन ए फ्यू टाइम वी कैन फाइंड द व्हाट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्ट्स within a limited time. Okay, and we also get an accurate result. Another is barcode reader. It is normally used in shops, grocery stores, etc. This device contains the photoelectric cells that read the barcodes consisting of lines having different thickness. It helps shopkeeper to analyze the price of an item immediately. Okay, just like your handheld scanner, the barcode reader is also useful for the same. That is, it is generally used to read that bar lines. Okay, that's why it is called barcode reader. देखो कैसे वो read करता है यहाँ पर. An example of UPSC barcode. Okay, so when it places that device, that barcode reader over these lines, bars, okay, how it will be detected? The lines is showing that is, it is coded as what? 21000. That will be showing through the what? Through the barcode reader. What does 0 indicate? सब न्यूमेरिक फॉर्म में आएगा रिजल्ट, और न्यूमेरिक फॉर्म से वो जो मैन्युफैक्चरर और सप्लायर जो है वो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लेगा ये कौन से प्रोडक्ट से रिलेटेड है, कौन से कंपनी से है. ओके, सो 0 एक एग्जांपल दिया गया है. देखो, 0 इज रिलेटेड टू योर ग्रोसरी प्रोडक्ट्स, 3 is for drugs and health related products.
Okay, like some of the numbers is to be used in the bars. Okay, and that are easily readable by the barcode reader. Okay, barcode reader से हम इसको find out कर सकते हैं. So to detecting the bars, we use this device. For that, we are called as barcode reader. Okay. Next is magnetic ink character recognition, MICR. आप कभी चेकबुक देखे हो? आपके फादर कोई भी चेकबुक आपको कभी दिखाएं? देखो वहां पर नीचे एक लेटर्स लिखा होगा, स्पेशल सिंबल्स में होगा. ओके, सो दैट one is detected by the what? MICR से हम उस नंबर्स को डिटेक्ट कर पाएंगे. That MICR is detect. It is related to which account? Okay, what is the amount? Everything is to be, every details related to that account will be fast through the what? MICR device. Okay, तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर. It is used to read the magnetically encoded characters. It provides a full alphanumeric recognition of printed or handwritten characters by simply scanning the form. It scans the data through a scanner, which is recognized by an engine of the OCR system. It converts the images into machine readable characters. Okay, देखो यहाँ पर example है. Okay, consider that checkbook contains this type of symbol, that numeric and some special symbols are there. Okay, so MICR is convert these symbols into related to the what? To the complete information. जो भी आपके चेकबुक में जो अकाउंट नंबर जो भी है वो सारा डिटेल्स वो MICR डिवाइस के थ्रू में हम स्पेशल सिंबल्स को स्कैन करके वो क्या करेगा, वो इट कन्वर्ट्स इनटू टेक्स्ट फॉर्मेट एंड स्टोर इट इन द कंप्यूटर. ओके, सो जनरली इन द चेकबुक वी आर यूजिंग दैट मैग्नेटिकल इंक कैरेक्टर्स. इसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिकल इंक कैरेक्टर को रीड करने के लिए ही हम MICR कैरेक्टर को डिवाइस को यूज करते हैं. ओके, digitizer. It is used to convert maps, pictures and drawing into digital form. हमने बताया था digitizer में और एक हम यूज करते हैं stylus. That is also look like a what? Light pen. जैसे लाइट पेन है वैसे और एक हम डिवाइस यूज करते हैं डिजिटाइजर में. That is one is called digitizing tablet. This is called digitizing tablet and this is which is held by the what? That user in hand, that is in pen shaped, that is called stylus. Okay, so through the stylus we can draw any picture, maps, drawings and it automatically convert that drawings into digital form and store in the computer system. It is consist of a what it contains, that is digitizing tablet, another stylus. सिर्फ डिजिटाइजिंग टैबलेट रहने से नहीं होगा, आपके पास और क्या रहना चाहिए? स्टाइलस पेन भी रहना चाहिए. देन ओनली यू कैन यूज दैट डिवाइस प्रॉपर्ली. Digitizing tablet is a flat surface on which stylus or a pen is moved to draw shaped pictures or maps. Okay, कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपको याद रखना है उसका फुल फॉर्म क्या है और उसमें क्या क्या डिवाइसेस यूज करते हैं एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दैट डिवाइस, वेयर वी यूज इट. ओके, अनदर इज इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर. वो पिक्चर देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा वेयर वी यूज इट. इट इज यूज्ड टू see in a what? In a e-card, used in an e-card, smart cards like Visa card, bank credit card, etc. It reads the memory cards of the ATM or debit card or Visa card. The memory card is in the form of a black strip. आप देखे होंगे ATM कार्ड के पीछे black strip रहता है
Okay, and that black strip is to be readable by the what? Through the electronic card reader device. Okay, which is equipped wiped through an electronic card reader machine. उसके ऊपर हम wipe करते हैं कौन से फेस में? जहां पर ब्लैक कलर का स्ट्रिप रहता है आपके एटीएम कार्ड में, देखना. Okay, so through the electronic card reader we can use our ATM cards, debit cards, Visa cards. Okay, how you use it? There is a black strip is to be there in the memory card, and you have to wipe through the electronic card reader machine. Next we have to see, or the last one, that is speech recognition devices. It allows a person to input data to the computer through speech. Okay, so अगर आपको कुछ भी काम करना है कंप्यूटर में, आप थ्रू वॉइस भी हम कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप या जो भी है मोबाइल डिवाइस को हम ऑपरेट कर पाएंगे. एंड ऑल्सो यू कैन स्टोर एनी इंफॉर्मेशन थ्रू द स्पीच. Okay, that's why it is called speech recognition device. It converts human voice into text. This device is specially helpful for, किसे हेल्पफुल होगा ज्यादा बोलो? डिसेबल्ड पीपल, जो अंधे होते हैं, जो दिखाई नहीं देता है, उन लोगों को ये ज्यादा हेल्पफुल रहता है. It has the capability to first recognize words with the help of a software or a device and then convert it into text or command. Okay, how it works? Some special software is to be loaded for the speech recognition. Okay, so through that software it fetches the voice and convert it into text or command. Okay, so how many types of softwares we can use? Two types. One is single word speech recognition system, another is continuous types of word speech recognition system. Two types के हम software use करते हैं, system use करते हैं. Okay, so single word speech recognition system में क्या होता है? This system is recognize only single words, like means एक बार में वो कितने सारे वर्ड को रिकॉग्नाइज कर पाएगा? ओनली सिंगल वर्ड एट ए टाइम. ओके, that is recognized by that system, like for example hello. Okay, is it word single word? Then yes, no. Okay, these are the examples of single word speech recognition system. Continuous types, consider if you want to speech a long sentence. Okay, so in that case, we use which type of device? That is software, continuous type of word speech recognition system. You have to load it in your device. Then only you can, that system is recognize your full sentence. Like for example, hello, how are you? That is multiple words are there. Okay. Where we use it? One of the uses already tells, that is it is helpful for the disabled people. Those are who cannot write it. It helps people who feel comfortable in speech rather than writing. जिन्हें लिखना पसंद नहीं है, जिन्हें बोलना ही पसंद है, वो भी यूज कर सकते हैं. It facilitates a user in a situation when he or she is unable to edit or review a long text. जिन्हें दिक्कत होती है, बिजी होते हैं, जो कि एडिट और रिव्यू लॉन्ग टेस्ट को करने के लिए उनको दिक्कत होती है. इन दैट केस ऑल्सो वी यूज द व्हाट? स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस. It also helps the user who is quite busy and does not want to type the data due to shortage of time. Okay, in those cases we are using the speech recognition devices. Generally it is helpful for the disabled people. Okay, so all the important input devices is to be covered. So many input devices are there. Okay, but I have covered some of the input devices which is very important.
in your exam, which is mostly comes in your exam, that is the OMR, MICR, OCR. Okay, these are very important input devices. In every competitive exam, one of the question is to be comes from this part. Okay. Most of the students are saying nothing audible. Nothing is visible. Okay. I think all of you understand all the input devices or any questions, students? Nothing is visible. ग्रीवा देखो आपका सिस्टम मोबाइल हैंग हो गया होगा. वो एक स्टैंडर्ड है, वो CRA इज यूज फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड. ओके, जैसे लैंग्वेज डिफर करता है उसी तरह. ग्रीवा फिर से रिफ्रेश करो आपके मोबाइल को, स्विच ऑन करके ऑफ करो या फिर पेज को रिफ्रेश करो. आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसीलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. A plotter is comes under output device. Students, you never confused in the what? In the input and output device. Input is related to what? कौन से डिवाइस को हम इनपुट बोलेंगे? जिस डिवाइस से हम कंप्यूटर में कुछ स्टोर कर पाते हैं. Okay, if you store anything in the computer by using any device, then that is called input. आपने अभी तक जो भी इनपुट आपने देखा है उसमें कोई भी आपको आउटपुट दिखाया? Yes, to give commands. Satya Prakash is again says that, ma'am, nothing is visible. That is a problem in your device, student, due to network. So whenever you have this type of problem, you just switch off your mobile phone or refresh the page if you are using a laptop, or if you're accessing through the mobile. Okay, if you connect with the connect your mobile and to the laptop, then also you that is what, मोबाइल डाटा फिर से ऑफ एंड ऑन करो, जिससे फिर से आपका रिफ्रेश होगा. हाँ, फिर से नेटवर्क स्पीड में चलेगा. ठीक है. पेन ड्राइव इज ए मेमोरी डिवाइस, स्टूडेंट. ओके, कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए हम बोल रहे हैं. इफ यू स्टोर एनीथिंग इन द कंप्यूटर, ओके, जो डिवाइस हम यूज करेंगे मेमोरी में स्टोर करने के लिए, सो पेन ड्राइव इज ए मेमोरी डिवाइस. Okay, and we already says that the memory device is always called as input as well as output device. Why? Because in a memory we can store both input as well as output. Fine. स्टोर करने के लिए स्टोर करता नहीं है वो डिवाइस. इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस से हम मेमोरी में स्टोर करते हैं. I think you face some network problems. You see your network is to be working properly or not. Okay, Griva, don't worry about it. That is, as once the lecture is over, then this video is automatically created, and I think it is also visible to you, to your classes, which is already covered. इनपुट और आउटपुट नहीं है. पेन ड्राइव इज ए मेमोरी डिवाइस, ओके, जिसमें हम स्टोर करते हैं. इनपुट डिवाइस इज नेवर यूज्ड टू स्टोर एनीथिंग. इट इज यूज और हेल्प टू स्टोर इन ए मेमोरी डिवाइस. ओके, कीबोर्ड से हम जो एंटर करते हैं, कीबोर्ड में स्टोर होता है क्या? नहीं ना. कीबोर्ड से हम जो भी डाटा एंटर करते हैं वो मेमोरी में जाके स्टोर होता है. ओके, सो बाय यूजिंग एनी डिवाइस, इफ यू स्टोर एनीथिंग इन द कंप्यूटर, जिस डिवाइस से हम कंप्यूटर में अगर कुछ स्टोर कर पाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड इनपुट. ओके, कंफ्यूज नहीं होना. इसी चक्कर में बच्चे ये इनपुट है आउटपुट है कंफ्यूज्ड होके वो लिख देते हैं. फाइन. ऐसा कोई डिवाइस है जो आपको ऑटोमेटिकली आउटपुट दिया है विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन? Every device must be used by the what? Used by the user. हम उसको ऑपरेट करते हैं and through the user the device will be working and
The device takes the data and commands from the user and store inside the memory. Simple. If you store anything in the computer system by using any device in digital form, okay, हम किस फॉर्म में देते हैं? इंग्लिश फॉर्म में देते हैं, and the computer is only understand the what? Binary form. So who convert it? The input device is convert into binary form and store inside the memory. Okay. Can we scan documents in a printer? Students, printer is not to be used for the scan. Printer से हम कुछ store करते हैं. Printer is an output device. Why? अगर हम कुछ देख पाते हैं कंप्यूटर से, okay, if a computer is doing itself and gives some result to the user, then that is called output device. मेमोरी में जो भी स्टोर हुआ है उसको निकाल के अगर हम पेपर फॉर्मेट में या फिर डिजिटल फॉर्म में देखते हैं, so that is called as what? Output device. मॉनिटर, मॉनिटर में क्या होता है? हम देख पाते हैं रिजल्ट, है कि नहीं? तो कैसे देखते हैं? वो मेमोरी में जो भी स्टोर हुआ है उसे रिट्रीव करके उस स्क्रीन में हमें दिखाता है, इसीलिए हम देख पाते हैं. Defragmentation. Yes, that is you have whenever you load purchase any new computer, that is only one drive is to be there. Okay, उसको हम defragment करते हैं, C drive, D drive, E drive, different drive में divide कर देते हैं, जिससे हमें आसानी होता है स्टोर करने के लिए. Okay, so let's go with the output device. So commonly used output device is used as monitors. We are popularly use the monitor as an output device. And next we are using printers, plotters, screen image projector, web camera. So most of the devices are related to the output devices. But here I am only discuss that is important devices which is mostly used. Okay. So before go through the different output devices, first we have to understand that output devices produce a soft copy or a hard copy. Okay, I think all of you understand what is the difference between soft copy and hard copy. Soft copy किसे बोलते हैं बताओ? If you store any documents in a computer system, that is soft copy or a hard copy. Already I am showing on the screen. It is temporary in nature because it does not appear on the paper. इसको क्यों टेम्पररी बोला जाता है? क्योंकि जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है, as it is generated in electronic format and stored inside the computer. So how you access the soft copy output? If you have a computer and if your system is on, switched on, then only you can access or see that documents. Okay, so that's why it is called as what? Temporary in nature, because it does not appear on the paper. क्योंकि ये पेपर में दिखाई नहीं देता है, इसीलिए उसे क्या बोला गया? टेम्पररी इन नेचर बोला गया. और some materials that user can carry for showing to others or for filing and use when he is not using a computer. Okay, why it is called temporary in nature? What are the features? Is to be related because we never print that content on the paper. पेपर फॉर्म में उसको नहीं देखते हैं, फाइल भी उसको फाइलिंग भी नहीं कर पाते हैं उसे, एंड डज नॉट कैरी वेरी इजीली. कंप्यूटर सिस्टम को क्या आपको वो मटेरियल दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपका कंप्यूटर सिस्टम आपको लेके जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा. इज इट पॉसिबल? That is difficult to move the
device to show the document to the user. है कि नहीं? That's why it is called as temporary in nature. देखो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट लिखा गया है. नॉट प्रोड्यूस्ड ऑन ए पेपर. पेपर में प्रोड्यूस नहीं होता है. और सम मटेरियल्स दैट कैन बी टच्ड एंड कैरिड फॉर बीइंग शोन टू अदर्स. Temporary in nature and vanish after use means when you switch off the computer, that file will be disappear. Examples are output displayed on a terminal screen. What is the terminal screen? That is your monitor. और spoken out by a voice. अगर आपको सभी को समझाना है, if number of users are there, then how you show that document? Through the by spoken out by a voice response system. है कि नहीं? आपको स्पीकर लगा के उसको पढ़ के आपको बस समझाना पड़ेगा. Okay, that's why it is called soft copy output. Simply, if you remember this one, then if you create any document or store any document in a computer, then that is called soft copy. Okay, so if the document is in the form of a paper, then that is called hard copy output. Okay, hard copy output में क्या लिखा गया देखो, produced on a paper. How to produce on a paper? आपके कंप्यूटर में आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, उसे जाकर आपको दूसरे यूजर को देना है वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. हाउ यू गिव इट if that user does not have any computer system? How you give it? By using printer. Okay, nahi? So printer is called as what? Hard copy output. Why? Because through printer we can print the document in the paper format. है कि नहीं? कंप्यूटर में जो भी स्टोर हुआ है, अगर उसे पेपर फॉर्मेट में हमें प्रिंट निकाल के एक दूसरे यूजर को देना है, तो हम वहां पर कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर. दैट्स व्हाई प्रिंटर इज कॉल्ड एज हार्ड कॉपी आउटपुट, क्योंकि हम उसको पेपर फॉर्मेट में ले सकते हैं. तो पेपर फॉर्मेट में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रहेगा, सो दैट वी कैन इजिली मूव एंड गिव टू एनी यूजर. ओके, सो दैट इज कॉल्ड परमानेंट. So produced on a paper or some material that can be touched and carried for being shown to other. उसको कैरी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, है कि नहीं? किसी को आसानी से उस वो डॉक्यूमेंट हम दिखा भी सकते हैं, बिकॉज द डॉक्यूमेंट इज टू बी देयर इन पेपर फॉर्मेट. Permanent in nature, yes, and can be kept in paper files or can be looked at a later time. जब चाहे तब हम देख सकते हैं उसे. हमें कोई कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ता है अगर वो पेपर फॉर्मेट में है कि नहीं? उसको इजीली हम फाइल में भी रख सकते हैं. सो व्हेन द पर्सन इज नॉट यूजिंग द कंप्यूटर. सो एग्जांपल्स आर आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय प्रिंटर्स और प्लॉटर्स ऑन पेपर. ओके, सो बेस्ट एग्जांपल फॉर हार्ड कॉपी आउटपुट इज योर व्हाट? प्रिंटर और प्लॉटर्स. ओके, so first we have to understand what is monitor. So without monitor, are you get any result from the computer system? It is most popular output device bola gaya. Why? Because a monitor, without a monitor there is no use of computer system. Okay, so generally we use the monitor as a output device to see the what? Soft copy or a hard copy? Soft copy output. So ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मॉनिटर इज प्रोड्यूस और यूज फॉर डैश कॉपी आउटपुट, डैश आउटपुट, डैश टाइप ऑफ आउटपुट, देन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट. ओके, याद रखना. सो मॉनिटर से हम क्या जनरेट करते हैं? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, क्योंकि वो कंप्यूटर सिस्टम में ही रहता है. पेपर फॉर्मेट में हम उसको देख नहीं पाएंगे, है कि नहीं? सो डिस्प्ले द आउटपुट ऑन ए टेलीविजन लाइक स्क्रीन. उसको एग्जाम्पल दिया गया, जैसे हम टेलीविजन स्क्रीन में अगर उसे देखना चाहेंगे तो वो देख पाएंगे. मॉनिटर एसोसिएटेड विथ ए कीबोर्ड इज कॉल्ड ए वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल. वो किसके साथ रिलेटेड है? वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीडीटी पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे? वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल. इट इज द मोस्ट पॉपुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस. And monitor is also called as a VDU, that is visual display unit. Okay,
So all are aware about that is how the computer system will be look like. ओके, टाइप्स ऑफ मॉनिटर. कितने टाइप के हम मॉनिटर यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर लैब में? जो पहले आप जब थे, जब नया सिस्टम नहीं था, तो कौन सा टाइप का हम मॉनिटर्स यूज करते थे? CRT monitors, that is called cathode ray tube. Okay, what is the full form of CRT? Cathode ray tube. Okay, this is very important to remember. Okay, monitors look like a television and are normally used with non-portable computer system. इसको हम आसानी से एक जगह से, non-portable means what? As it is very heavier, okay, and it consumes more electricity. That's why it is also called as a non-portable. Non-portable means not movable from one place to another place due to its heavier in nature. Okay, जो lighter thin होगा उसको हम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले पाएंगे. Fine. And flat panel monitors, that is your LCD, LED, जो आप टेलीविजन स्क्रीन में भी हम यूज करते हैं. Okay, we are using LCD and LED monitors. So that is called flat panel monitor. उसे कौन सा टाइप का मॉनिटर बोलते हैं? Flat panel monitors are thinner and lighter and are commonly used with portable computer system like notebook computers. Notebook मतलब जो टैबलेट शेप में होते हैं. Okay. Now they are also used with non-portable desktop computer system because they occupy less table space. So देखो CRT monitors कैसे दिखते हैं? Then we are using LCD, then LED, OLED, okay, touch screen monitors, and now we are using UHD monitor. That is a high resolution, high pixel. That's a HD. UHD मतलब HD जो मूवीज होते हैं उसको देखने के लिए, मतलब HD मूवी से भी 7 गुना ज्यादा ये क्लैरिटी आपको दिखाता है. ओके, so CRT, it is a vacuum tube that contains one or more electron guns and a phosphorescent screen used to display images. इसमें क्या क्या यूज किया जाता है CRT मॉनिटर में? It is a vacuum tube that contain one or more electron guns and phosphor. Okay. Send screen used to display images. ये आपको याद रखना है. CRT images display करने के लिए क्या क्या यूज करता है? Phosphor and electron guns. Okay, it contains millions of tiny red, green and blue phosphor dots.